Hello friends, today we are going to discuss I think one of the very important topic of the chemistry, and that is how to evaluate the geometry of a molecule through the hybridization. ओके आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है पूरा केमिस्ट्री का, जो खाली 11th स्टैंडर्ड में नहीं 12th स्टैंडर्ड में, इवन after your entrance for any kind of entrance exam, this concept, this understanding is required. And what's that? And that is the geometry of a molecule. How to determine the geometry of a molecule. Okay, now today in this video, after the end of this video, I can sure that student will not require more than 30 seconds to draw or understand the structure of any kind of molecule with the help of the concept of hybridization. इस वीडियो के बाद कोई भी स्टूडेंट को 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जियोमेट्री समझने के लिए ना। वो तो ठीक है, हम जियोमेट्री समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट, एक बेसिक क्वेश्चन आई थिंक वी नीड टू डिस्कस दैट व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जान के हम क्या करेंगे? व्हाट आई नो, व्हाट आई कैन टेल यू दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डिसाइडेड बाय इट्स स्ट्रक्चर, बाय इट्स शेप। कोई भी मॉलिक्यूल का कैसा बिहेवियर होगा, ओके, उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर, जियोमेट्री, ये सब मिलकर तय करता है उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टी को। Okay, so property is one of the important, that's what we interested to know, the property of the molecule. Okay, and property decided by the geometry of the molecule. तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, very important, the geometry of a molecule through hybridization and hybridization. We know what is the hybridization very well. ओके तो चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग आज के डिस्कशन, जियोमेट्री ऑफ ए मॉलिक्यूल। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस आई हैव ऑलरेडी प्लान्ड ए ब्यूटीफुल टेबल। इसको बहुत आसान तरीके से समझने के लिए मैंने जानबूझ के एक टेबल बनाया है ताकि आप क्लियरली देख सके क्या कोरिलेशन है, उसको याद रखने में हमें किस तरीके से मदद होता है, हाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड बिलीव मी सर, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वन कैन सो मच कॉन्फिडेंट, वन कैन इजीली इवेल्युएट द स्ट्रक्चर और द जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड दैट इज नीडेड, दैट इज हाईली नीडेड फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। ओके, एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस इफ समवन कैन आस्क मी सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक, ये हमारी कौन से टॉपिक के, कौन से चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है? दिस बेसिकली द कॉन्सेप्ट रिक्वायर इन नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। नेचर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट मिलेगा, जहां पर बात होती है VSEPR थ्योरी की, जहां पर बात होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जहां पर बात होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। बट बिलीव मी सर, दिस कॉन्सेप्ट is not only limited to the nature of chemical bonding topic. It is required in your S block element, in your P block element, and I already said in any entrance exam. Okay, तो चलिए शुरुआत करेंगे। So first of all, we'll write the number of electron pair. Okay, in the first column I am writing number of electron pair. Then the second column will talk about the hybridization. Hybridization, कौन सा hybridization है उसका? Then the third column talk about the geometry. Geometry of the molecule, उसका geometry कैसा होगा? Then the fourth column will talk about the shape or structure of the molecule, and the last column obviously I am putting it as a bond angle. Bond angle. So they have a very beautiful correlation. उन लोगों के बीच में एक काफी इजी कोरिलेशन है, जैसा मैंने शुरू में बताया। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम बताएंगे आपको that with the help of this concept, with the help of this understanding, how we can determine the structure of a molecule, and that too in a very minimum time. Okay, so if the number of electron pair is 2, then the hybridization will be sp.
What is S, what is P, we have already discussed in our previous video. Okay, so SP. Then geometry will be linear. It will be linear geometry. Now linear geometry means this is the structure, linear geometry, and obviously you can understand the bond angle will be 180 degree. Then if the number of electron pair is 3, then the hybridization will be sp2. Now how we can easily remember? Look at here, S का 1, P का 1, 2, S का 1, P का 2, total 1 plus 2, 3. You can see number of electron pair is 3. This is how we can easily remember sp2. Then sp2 structure is trigonal planar. You can see this is the structure. Trigonal planar means it is a two-dimensional structure. Very important, we need to know that. Okay, trigonal planar. Now what is the bond angle? Bond angle obviously 120 degree. You can ask me that how 120 degree came. Sir, total is 360, you know that. 360, now you divide it by the 3. Obviously 120. It is just like you assume like the 3 blades of a fan. Okay, so this is 120 degree. Now we go for if the number of electron pair is 4, then the hybridization is sp3. फिर से वही देखिए, S का 1, P का 3, total 4. Then the structure is tetrahedral. This is the structure. Tetrahedral structure. 1, 2, 3, 4. Tetrahedral means 4 face, not the 4 lines, 4 face. And the bond angle here is very interesting, 109 degree and 28 minute. This is a first asymmetric structure. You cannot divide the structure into equal part. Asymmetric structure. This is also asymmetric structure. Okay. Now symmetric, asymmetric is fine, we can understand. But the concept we don't understand, sir, यहाँ पर आपका 90 डिग्री क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट कैसे? जिस प्रकार से आप समझा रहे थे उस हिसाब से तो 90 डिग्री होना चाहिए था. नो सर, यहाँ पर आपको और एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है जो बहुत सारे स्टूडेंट को जानना जरूरी है, और वो ये है कि सर इन व्हाट बेसिस वी आर मेकिंग दिस स्ट्रक्चर. ऐसी जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसका बेसिस क्या है? इसका बेसिस ये है सर, रिमेंबर यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिपल्शन टू द अनदर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में एक इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन काम करता है. रिपल्शन जितना ज्यादा होगा उतना एनर्जी ज्यादा होगा, जितना एनर्जी ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम हो जाएगा. And you know every molecule try to become stable. स्टेबल होने के लिए रिपल्शन को कम करना है. रिपल्शन को कम करने के लिए वन इलेक्ट्रॉन नीड टू बी अवे फ्रॉम द अनदर इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर दूर रहना होगा. दैट इज द कॉन्सेप्ट. दैट कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर में एक इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे इलेक्ट्रॉन पेयर से दूर रहेगा, एंड दिस इज व्हाट इज पॉसिबल. यू कैन सी दैट द मैक्सिमम बॉन्ड एंगल, अगर मैं इसको 90 डिग्री करता तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक होता, एंड नजदीक अगर होता ऑब्वियसली द मॉलिक्यूल बिकम अनस्टेबल बिकॉज रिपल्शन इज गोइंग टू बी हाई. सो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हाइब्रिडाइजेशन में हम वही स्ट्रक्चर तय करते हैं, वही स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वही स्ट्रक्चर कन्वेंशनली लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन कम हो, सो दैट बॉन्ड एंगल इज हायर and molecule becomes stable. Very good. Now we go for number 5. If the number of electron pair is 5, then the structure is sp3d. Sometimes student here also confused, sir, why not sp4? Let me quickly tell you. I can tell you as a rough here.
See, in S we have only one orbital. In P we have three orbital, three. So P maximum 3 बन सकता है. 1 2 3. You can see that 3 के बाद हम P में नहीं जा सकते. We have to go for the D. So this is all. This is the reason that we can go maximum up to sp3. We cannot go for sp4. Okay, sp3d. sp3d structure is trigonal bipyramidal. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा है ये देखिए. दिस इज ट्राइगोनल एंड दिस इज द बाइपिरामिडल. सो हाउ मेनी पॉइंट? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर. वी हैव 1 2 3 4 5. दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, so this is the bond angle. यहाँ पर आपको we will get 2 different type of bond angle. One is the planar, that is obviously 120 degree, and perpendicular, which is perpendicular to the plane, will create 90 degree of bond angle. Okay, 90 degree of bond angle. Now we'll go for number of electron pair. If it is 6, then the hybridization is sp3d2. ओके, sp3d2. s का 1, p का 3, 3 plus 1 4, d का 2, 4 plus 2 6. okay, so this is how we'll remember. That will help us to remember better. Okay, sp3d2, and the structure is very famous, and that is octahedral. Okay, that is octahedral. And what is the structure of the octahedral? Okay, the structure of the octahedral is something like this. This is the structure of octahedral. Okay, this is the structure of the octahedral, and here also you can see 6 points. 1 2 3 4 5 6. Okay, and all the bond angles are same here, and that is 90 degree. That is 90 degree. So this is octahedral. Okay, so मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं ये ताकि आपको समझ में आए. So this is octahedral. This is octahedral structure. Okay, octahedral structure. So it number of electron pair 6. Mostly जो हम लोग को structure मिलता है in our 11, 12 or entrance, mostly number of electron pairs dealing with from 2 to 6. But suppose in one of the molecule, I remember now, one of the molecule, the molecule name I remember is, if it is IF7, let me write it, IF7. In that molecule, okay, in that molecule, the number of electron pair is 7. If the electron pair is 7, okay, then the hybridization is sp3d3. Very simple. S का 1, P का 3, D का 3, total 7. sp3d3, and the structure will be pentagonal bipyramidal. Pentagonal bipyramidal, and the structure looks like this one. Okay, pentagonal bipyramidal. This is the structure looks like 1 2 3 4 5 6 and 7. And a bond angle, obviously the planar bond angle is 72 degree, and the perpendicular obviously the 90 degree. So this is the entire list. Okay, so this is the entire list of the hybridization and the molecule that is needed. This is need to remember. We need to remember this. Okay, we need to remember this. Remember in my last video जहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कहा था, वहाँ पर मैंने बताया था you have to remember the electronic configuration, and today I am telling you you have to remember this beautiful table as long as you are connected to the chemistry. Okay, it is such an important table. Okay, I hope all my students, they have already either they have take the screenshot or they have write it down in the table. Very important, because I have to erase this part, and then I have to take a real example.
I told you in the initial in the video that it will take only 30 seconds to find a geometry of any kind of molecule. Geometry is needed to understand the properties of the molecule. Okay. Now before I go for the geometry discussion, one more thing I think I need to include, and that is the concept of lone pair and the bond pair. I think this word lone pair and bond pair, so I'm just going away. I hope you can take the screenshot, or you can pause the video, you can write it down. So okay, so let me erase the board and then let me start with the concept of lone pair and bond pair. So before I go to evaluate the structure of any molecule, or to evaluate or determine the geometry of any molecule, we need to know the concept of bond pair and lone pair. I am going to explain with the help of an example for sure. Okay. Now what is bond pair? Bond pair, where the electron pair are involved in a bond, that is a bond pair. Remember, in the bond pair, the electrons are being controlled by the nucleus of two atoms. Let me repeat what I said. Okay, example. Let me give you an example of ammonia, NH3. Okay, how the molecule का structure कैसे आया वो हम बाद में discuss करेंगे जरूर. फिलहाल मुझे ये समझाने के लिए जो जरूरत है, that is the structure of ammonia. Now you can see here hydrogen and this. Okay. Now the electrons which are involved in the bond, that's what I read, electron pair which are involved in the bond is known as bond pair. So here the electrons in a bond pair, here the electrons is a bond pair, here the electrons in a bond pair, and you can see the electrons here, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस और नाइट्रोजन एटम का न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है. So bond pair में electrons are attacked. Okay, electron are fixed. So that you have to understand. Now look at the lone pair. What I said, lone pair. So bond pair को हम in short लिखेंगे BP. Lone pair को in short हम लिखेंगे LP. Now lone pair. Lone pair, electron pairs not involved in bond formation and attached to a single atom. That is interesting. Look at here. This is the lone pair. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन कोई बॉन्ड में अटैच नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, जियोमेट्री में इन्वॉल्व नहीं है. ओके, दिस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? They are attached to only one nucleus or one atom. Here the lone pairs are only attached to the nitrogen. So that is because they are alone. So that is lone pair. And these electrons can move like a electron cloud. Remember, these electrons, just like you can see, just like a wiper of a car, this electron can move like an electron cloud. And that is the reason the repulsion, okay, the repulsion is higher between the lone pair and lone pair, then between the lone pair and bond pair, और सबसे कम repulsion है between the bond pair and the bond pair, and that we can easily understand because bond pair में जो electrons है वो fixed है, एक जगह पर है, they cannot move. But lone pair or lone pair का electron they can move. That is the reason you can expect the maximum repulsion between the lone pair and lone pair, then lone pair and bond pair, और सबसे कम bond pair और bond pair के बीच में. क्वेश्चन है कि सर इससे क्या मतलब है, इससे क्या असर होता है, ये जो हम बोल रहे हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो हम सीख रहे हैं, इससे जरूरत क्या है? एक्चुअली ये रिपल्शन तय करता है आपका बॉन्ड एंगल. जो बॉन्ड एंगल हमने आपको दिखाया था, दैट इज द आइडियल वैल्यू. बिलीव मी सर, यू वोंट गेट द सेम बॉन्ड एंगल. आपका हाइब्रिडाइजेशन भले ही sp3 हो रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आपका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री ही होगा. इट मे बी लेस देन दैट, और वही बात हम करेंगे आगे जाके. बट
फिलहाल ये समझ लीजिए दैट लोन पेयर का रिपल्सन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन उसके बाद, और ये रिपल्सन इन्फ्लुएंस करता है टू डिसाइड द बॉन्ड एंगल ऑफ ए मॉलिक्यूल, टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल. Okay, now we are going to discuss the geometry. I told you in the initial of the video, एक molecule 30 second geometry understand. Let's try. So we'll now going to talk about the determination of the geometry. Before that, we had a good understanding on the number of electron pair क्या होता है, उसके साथ geometry, hybridization, bond angle, we know very well. We know the concept of lone pair and bond pair. चलिए आप इसको implement करते हैं. We'll start with a very simple molecule. Let me start with a very popular molecule CH4. Okay, CH4. Now, what is the atomic number of carbon is 6. Atomic number of carbon is 6. That is the central atom. 6 means 2,4. Okay, it means in CH4 कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन. ओके, 4 हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 4. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 8 इलेक्ट्रॉन. 8 इलेक्ट्रॉन मींस कितने पेयर? 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 पेयर, दैट वी नो. ओके, एक पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर, 8 इलेक्ट्रॉन. अब देखिए ये जो 4 पेयर है, कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? आपको दिख रहा है CH4. इट मींस कार्बन हैव मेड 4 बॉन्ड्स. इट मींस ऑल द 4 पेयर मेक 4 बॉन्ड पेयर. ओके, 4 पेयर 4 बॉन्ड पेयर में इन्वॉल्व है, इसमें कोई लोन पेयर है ही नहीं. ओके, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग. नाउ 4 पेयर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3. sp3 में कौन सा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द CH4. This is the structure of CH4. What is the bond angle? The bond angle is 109 degree and 28 minute. Believe me, sir, मैंने आपको शायद समझाने के लिए I took 60 second, but this require only 30 second. Okay, so एक बार फिर से कार्बन सेंट्रल एटम, एटॉमिक नंबर 6. 6 मींस 2,4. 2,4 मतलब कार्बन से आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में. ओके, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो द आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग. सो कार्बन विल contribute 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. 4 पेयर में कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाया है, सो ऑल आर 4 बॉन्ड पेयर. ओके, सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, tetrahedral structure, bond angle this. So this is how the molecule structure work. I hope it is very easy. I will take few more example. Okay, I will take few more example to understand better. Okay, at the end इस discussion का जो खत्म जब करेंगे तब हम लोग एक खास मॉलिक्यूल की बात करेंगे जो हमने हाइब्रिडाइजेशन के बताया था IF7, उससे आज का वीडियो खत्म करेंगे. बट वहां तक जाने से पहले कुछ और मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं. BeCl2, beryllium chloride. Okay, where the beryllium is the central atom. Atomic number of beryllium 4 means 2,2. ओके, सो बेरिलियम से कंट्रीब्यूशन, बेरिलियम से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. 2 क्लोरीन से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन. टोटल कितने? 4 इलेक्ट्रॉन. कितना पेयर? 2 पेयर. BeCl2, अगेन बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाया है. BeCl2, बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाया है. सो 2 पेयर इन्वॉल्व इन 2 बॉन्ड पेयर. 2 पेयर से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp का स्ट्रक्चर क्या है? इट्स ए लीनियर स्ट्रक्चर. ओके, इट्स ए लीनियर स्ट्रक्चर. यू कैन क्लियरली सी दैट. एंड द बॉन्ड एंगल 180 डिग्री. आई डोंट थिंक it will need more than 20 seconds even. Okay, so very serious, very easily we can understand this. Beryllium 4, 2,2, beryllium will contribute 2 इलेक्ट्रॉन. 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए. सो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर.
दोनों ही बॉन्ड पेयर में हैं क्योंकि BeCl2 बेरिलियम ने 2 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड पेयर। sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर से sp ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। कैसे? कोई s का एक, p का एक, sp 2। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर विथ a bond angle of 180 degree. Okay, now we can go for few more. Okay, we can go for few more, and then as I said, we'll end with the very special molecule of its own nature, IF7, उसकी बात करेंगे। But before that, let me take the example of PCl5. Phosphorus atomic number is 15, 2,8,5. So phosphorus से आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन से आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। सो हाउ मेनी पेयर? इट इज अ 5 पेयर। ओके, 5 पेयर्स। ना देखिए 5 पेयर्स, PCl5 अभी तक तो आपको समझ में आ गया। PCl5 मींस फॉस्फोरस मेड 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब पांचों के 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आर इन्वॉल्व इन बॉन्ड पेयर। ओके, 5 पेयर मीन्स कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d। sp3d स्ट्रक्चर इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, trigonal bipyramidal, this is the structure of PCl5. Bond angle we know very well, and that is 120 degree and 90 degree. ओके, परपेंडिकुलर जो है वो 90 है, बाकी एक प्लेन में जो है वो 120 डिग्री है। ओके, सो दिस इज हाउ वी आर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर। दिस PCl5 स्ट्रक्चर इज प्योरली asymmetric structure. Asymmetric structure because by this line you cannot divide this molecule into equal part, so it's an asymmetric structure. Okay, PCl5. So now we go for one more example of SF6. Okay, SF6 actually मेरा प्लान ये है कि मैं मेरे सारे स्टूडेंट को हर एक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन के साथ मुलाकात कराऊं। That is my intention is. So I'll take SF6. SF6 sulfur is 16, so 2,8,6 सल्फर से आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फ्लोरीन से आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, so 6 पेयर and all are bond pair only. 6 bond pair क्योंकि SF6, okay, SF6 6 पेयर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3d2, S का 1, P का 3, D का 2, टोटल 1 + 3, 1 + 3 + 2 6। स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। व्हाई ऑक्टा? यहां पर भी एक सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम। ऑक्टा का मतलब है 8। 8 है क्या यहां पर? चलिए मैं आपको 8 क्या है वो भी दिखा देते हैं। कंसीडर दिस इज वन फेस, ये एक फेस है, दिस इज अनदर फेस। ओके, नाउ यू कैन सी एट द टॉप, यू कैन सी देयर आर वन फेस, दिस इज वन फेस, दिस इज अनदर फेस 2, सामने की तरफ एक 3, पीछे की तरफ एक 4, ऊपर 4 फेस और नीचे भी 4 फेस आपको आएगा। सो टोटल 8। That is the reason the name is given octahedral. That is also important to understand. So we are done with this. Now I think the students are eagerly wanted to know, sir आप जितने भी मॉलिक्यूल बात कर रहे हैं उस सब में बॉन्ड पेयर ही है, एक लोन पेयर वाला बात हो जाए। तो चलिए हम ऐसे 2 मॉलिक्यूल, मैंने जानबूझ के अभी तक नहीं बताया आपको कि अभी तक जितने भी मॉलिक्यूल का एग्जांपल वी हैव डिस्कस्ड, एवरीवेयर यू कैन सी द इलेक्ट्रॉन पेयर आर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड पेयर, बट वी नीड टू नो व्हाट इज द एक्चुअली इन्फ्लुएंस ऑफ द लोन पेयर। ऐसे 2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे। द फर्स्ट वन NH3, वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन 7, so 2,5। नाइट्रोजन इज द सेंट्रल एटम, सो नाइट्रोजन से हमें मिलेगा 5 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन से हमें मिलेगा 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। सो हाउ मेनी पेयर्स? 4 पेयर्स। Here something interesting, 4 pairs. नाइट्रोजन NH3, सो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड पेयर आपको चाहिए। 3 बॉन्ड NH3, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, सो 3 बॉन्ड पेयर, एक अभी भी बचा हुआ है, सो 1 इज द लोन पेयर।
So 3 plus 1, 4. Okay, how does structure? 4 pair is sp3 hybridization. sp3 hybridization, so nitrogen, you can see this is one, this is sp3 hybridization. So here we have 1 hydrogen, here we have a 2 hydrogen, 3 hydrogen, 3 बॉन्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, and the lone pair is here. Fine, sp3 hybridization, 3 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर. आप ये लोन पेयर कहीं पर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बॉन्ड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस. डोंट वरी अबाउट दैट. हम ड्रॉ कर रहे हैं, समझने में आसानी हो इसलिए हमने यहां पर लोन पेयर को ऊपर दिखाया, और कोई बात नहीं है. नाउ क्वेश्चन इज, यहां पर बॉन्ड एंगल आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री एंड 28 मिनट, बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज देयर इज ए रिपल्शन ऑफ दिस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, और उस रिपल्शन, देखिए बॉन्ड एंगल ऐसा था, अब रिपल्शन के वजह से क्या होगा? बॉन्ड एंगल थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा ताकि मॉलिक्यूल और स्टेबल हो सके. सो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू गेट 109 डिग्री. यहां पर हमें बॉन्ड एंगल मिलेगा 107 डिग्री एंड 18 minute. Okay, 107 degree and 18 minute. So this is the bond angle in ammonia, 107 degree and 18 minute, and you can clearly see the effect or influence of the lone pair bond pair repulsion. We are going to take one more example. Okay, we are going to take one more example of H2O, water molecule. That is something interesting again. Okay, that is something interesting of lone pair bond pair repulsion effect. In H2O, oxygen is 8, so you know 2,6. So oxygen will give 6 electron, 2 hydrogen will give 2 electron, total 8 electron. So it is again 4 pair. 4 pair means sp3 hybridization. यहां तक हमें बहुत अच्छे से मालूम हो चुका है. यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है? ऑक्सीजन H2O 2 बॉन्ड बनाया है. इट मींस ये जो 4 पेयर है इसमें 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होगा. ओके, वी कैन अंडरस्टैंड H2O की हमने बात किया है. सो sp3 hybridization, tetrahedral structure. So this is oxygen. Okay, we have, this is that tetrahedral structure. Here we have 1 hydrogen, here we have another hydrogen, and here we have the 1 lone pair. This is another lone pair. Now ideally यहाँ पर भी bond angle sp3 है. Ideally bond angle 109 degree and 28 minute होना चाहिए था, but because of the presence of 2 lone pair, so repulsion is even higher than ammonia. अमोनिया में जितना रिपल्शन होना चाहिए था उससे ज्यादा रिपल्शन यहां पर मिलेगा आपको, क्योंकि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है. सो द बॉन्ड एंगल हियर इज 104 डिग्री एंड 35 मिनट. Okay, so I think you can clearly see the effect of the repulsion of between the lone pair and the bond pair. Okay, वीडियो के आखिरी में एक मॉलिक्यूल जो हमने एकदम शुरू में बताया था, जिससे मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस मॉलिक्यूल इज इंपॉर्टेंट मे बी फॉर द एंट्रांस एग्जाम. ओके, IF7 नॉट वेरी यूजुअल, बहुत कॉमन नहीं है. दिस इज ए इंटरहैलोजन कंपाउंड. ओके, दिस इज इंटरहैलोजन कंपाउंड, दैट इज IF7. This is the last molecule, and I think with this concept we can easily draw the structure of any kind of molecule. Okay, iodine, how many electron? 7 इलेक्ट्रॉन आएगा. क्वेश्चन इज कमिंग, सर आयोडीन का आपने 7 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दिया? आयोडीन का एटॉमिक नंबर तो बहुत ज्यादा है, आपने 2,8,18 करके तो नहीं बताया. मैं बोलूंगा कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो दैट आयोडीन इज ए ग्रुप 17 एलिमेंट. सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. फ्लोरीन is 9, 2,7. Chlorine is 17, 2,8,7. Similarly, ब्रोमीन के बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा, आयोडीन के बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन होगा. दिस इज अगेन ए न्यू कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड कि एक ग्रुप के एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. सो इजीली वी कैन अंडरस्टैंड आयोडीन विल गिव 7 इलेक्ट्रॉन. 7 fluorine will give 7 electron,
total 14 electron, so it is a 7 pair, and all are bond pair. Okay, all are bond pair, no need to tell me again, because IF7 all are bond pair. 7 pair, कौन सा hybridization is sp3d3, and the structure is pentagonal bipyramidal. Okay, the structure is the pentagonal bipyramidal. Okay, this is the structure of IF7. Okay, I think with this understanding we can easily evaluate, determine the geometry of any molecule. Okay, I hope this video is very important, so always refer this video, always try to see the video, try to understand. Okay, I think it will help you in all kind of exams. Thank you very much. Namaskar.